Okay, I hope I am audible and visible. Ita here live achi. Ita application रे भी live achi plus YouTube रे भी live achi. YouTube रे इपाई live कोची because to let you know that ये series of session गुटे 40 ही आमरो. अब इटा day 21 ओडेटा सेशन मु ऑलरेडी करे सालेनी PYQ को नेकी GS रो PYQ ओडिसा रे जते भी एग्जाम हेची हमरो तारो PYQ को नेकी ଆଉ ଏବେଠୁ ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ ଆମ ଚାଲିବ ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ ମାନେ ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ ଚାଲିବ तो इंडियन पॉलिटी आम स्टार्ट करवा इंडियन पॉलिटी 1000टा क्वेश्चन रहिबो 1500टा क्वेश्चन रहिबो तो फर्स्ट 1000टा क्वेश्चन रो गुटे मु तमन को शेड्यूल देखुची देखो एटा होची प्लानिंग मोर तम माने जो माने मते विद्याकर रे देखिथिबो आई थिंक मो विद्याकर रे डिटो एई बळे ही करैथिले पूरा सेम मु आउ थरे सेमती ही करैबी तमन को पाई तो पूरा 1000टा जो पॉलिटी रो क्वेश्चन रहिबो एमिति ही भाग हेकिरि अछि these are the important chapters guys which you need to cover for any exam on a group B group C रो any exam guys मन को भाई बहुत बेनिफिशियल रहेगा आज डे 1 अछि डे 2 पई तमे रेडी हो जाओ काली प्रीएम्बल को यूनियन एंड टेरिटरी हमें पूरा कवर करियो तार जते क्वेश्चन माने डेली टारगेट इज 50 क्वेश्चंस तो आज हमें इंट्रोडक्शन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नै जिबा ता मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और सैलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर करिवा जेति की इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि वी आर गोइंग टू कवर गाइस एंड एटा देखो एटा पूरा प्लान तमन को पई डे 17 पूरा डे 20 पर्यंत अछि फाइन एंड आउ पांचटा एक्स्ट्रा सेशन रहइबो जोथरे सब बाकी जिंस गुडे कवर हबो सो लेट्स स्टार्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रो स्टार्ट करियो विथ द डिस्कशन गाइस लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट क्वेश्चन आई विल वेट फॉर योर रिस्पांस मु तमरो आंसर को वेट करबी तापरे मु क्वेश्चन को डिस्कशन करबी तो फर्स्ट क्वेश्चन को जीवा एंड क्वेश्चन 1 is all about okay the question is which act is considered the first step towards the framing of Indian constitution guys Indian constitution को फ्रेम करिया पई the first act तो तमे जानि जो कि ब्रिटिशर मानको कथा जदि मने पकेवा ब्रिटिशर आसिला परे गोटे कंट्रोल कोउ थ्रो रे आनिचंती दैट इज रेगुलेशन रेगुलेटिंग एक्ट थ्रो रे आनिचंती बिकॉज़ ईस्ट इंडिया कंपनी जेतला आस्तिला ती ता हिसाब रे जिंस करतला तापर क्राउन गोटे कंट्रोल सेट करला केमिति ना रेगुलेटिंग एक्ट फर्स्ट इंट्रोड्यूस करला जोटा कि फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फर्स्ट स्टेप हमें कहि परिबा फर्स्ट स्टेप फाइनल स्टेप जदि रहइबो दैट विल बी द कैबिनेट मिशन प्लान तो कैबिनेट मिशन प्लान रहइबो तमर फाइनल टा सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ए एक्ट रो इंपोर्टेंट फीचर गुडा को जदि हमें देखिबा इंपोर्टेंट फीचर रे सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कथा उठितला हां कि नहीं सुप्रीम कोर्ट ता सो तमे गोटे जानिथिबो जे गवर्नर जनरल ना गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल दैट इज वॉरेन हेस्टिंग ए कथा भी थिला 1773 एक्ट आउ कोन थिला बिले restricted the East Indian companies commercial and political activities को restrict करथिला because crown तार control put करथिला एटी and first attempt to bring the company under parliamentary control of British okay so answer for this question will be na board of control सेटा ता power को establish हेतिबो चलो तो ये होची तार आंसर फर्स्ट क्वेश्चन रो सेकंड क्वेश्चन को हमें पढेबा and here is the second question guys फाइनल अच्छा एटा होची तारा आंसर ता सब पेज रे तारा आंसर भी थिबो अच्छा चला सेकंड क्वेश्चन को जीवा द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स मोस्ट ऑफ इट्स फीचर मोस्ट माने भाई 60% टू 70% तक फीचर हमर कोउटो को रहिची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रु द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एई थ्रू मोस्ट ऑफ द फीचर हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे बोरो रहिची जेमिति की को कोन जानचो फेडरल सिस्टम वेरी गुड फेडरल सिस्टम हमें एटू बोरो करछु पोस्ट गवर्नर ही गला बोरो कराइछि आउ कोन बिले प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कथा थिला सेते बेले फेडरल कोर्ट भी है ना ओके आउ कोन थिला जो तमर तीनटा लिस्ट प्रोविंशियल है ना तो ये लिस्ट कथा भी होतो अछि काफी सारा जिंस अछि एगुडा होछि इंपोर्टेंट जिंस गुडा राइट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम जो एंड द थर्ड क्वेश्चन The idea of a constituent assembly for India was first proposed by M.N. Roy. First proposed by M.N. Roy. 1934 थिला first time propose हैला
ए भाई हमर गोटे निजर कॉन्स्टिट्यूएंट आमे गोटे असेंबली फॉर्म करिया निजर कॉन्स्टिट्यूशन पाई तो फर्स्ट टाइम के प्रपोज करथिले एम एन रॉय प्रपोज करथिले आईएनसी ऑफिशियली केमे डिमांड करथिला बेले आईएनसी 1935 रे ऑफिशियल डिमांड करथिला देन 1940 को आसिला तमरो अगस्त ऑफर 1942 क्रिप्स मिशन फैलेला फाइनली कैबिनेट मिशन रा अप्रूवल एग्री कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमरो डिसेंबर 9 माने नवंबर नहीं एप्रिल मे मास रे तमरो इलेक्शन हेतिला नहीं माने तमरो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हेतिला से टाइम रे एंड फर्स्ट सेशन को डेट रे हेतिला बेले 9th डिसेंबर फर्स्ट सेशन हेतिला चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा under which act were Indians allowed to participate in the legislative process for the first time पिले legislative process जदि कथा कहबा ताले पिले मने रखिबो एटा 1861 1861 पिले Indian Council Act of 1861 फर्स्ट टाइम इंडियन मान को इंट्रोड्यूस करथिले तार लेजिस्लेटिव माने लॉ मेकिंग प्रोसेस रे तो एटा गोटे भलो क्वेश्चन टा भी हेई पारे बिले तोड़ा मने रखिबो समस्ते डिसेंट्रलाइजेशन आड़ को फर्स्ट जाउतला तो तमे गोटे फेज देखिबो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रु ये टुवर्ड्स जाइतला सेंट्रलाइजेशन आड़ को 1858 एक्ट पर पुनी तर ये डिसेंट्रलाइजेशन आड़ गोला तो ये होची फेज दीटा गोटे क्राउन रूल वाला गोटे ईस्ट इंडियन रूल वाला तो ये होची तमरो आंसर हे जो बिले इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 The next question, the concept of responsible government was introduced in India by which act? Responsible government को था जदि हमें देखिबा responsible government 1919 रा एक्ट पिले मन रखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 हेतला कोन 1919 एक्ट रे डायर की इंट्रोड्यूस हेतला ना राइट एंड रेस्पोंसिबल गवर्नमेंट कथा सेही टाइम रे हेतला बिकॉज़ काउंसिल लो जो स्ट्रेंथ को बढ़ाइतला 60 कराइतला नहीं 16 रु 60 तो ये होची कथा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 हे जो तमनकर आंसर फाइन the Montague-Chelmsford reform are associated with which act again this is also the 1919 act जो डायर की आस्तला तो 1919 act हे जो Montague-Chelmsford reform आउ मोरलेमेंट रिफॉर्म होची कोटा 1909 वाला एक्ट शाबाश 1909 वाला एक्ट तो साइमन कमिशन अपॉइंट के बेला इंडिया को के बेसला दिटा जाको जिंस हे पाई 1919 रे जो जिंस सब इंट्रोड्यूस कराइतला ब्रिटिश को द्वारा एडा चेक करिया पई से 10 वर्ष पर गोटे कमिटी पठै थांते बट प्रायर टू 2 इयर्स से माने गोटे फॉर्म कर देले एंड 1927 रे से माने फॉर्म करछंती 1928 रे साइमन कमिशन इंडिया को आसीछि तो दिटा जिंस हे पारे केबे आसीला 28 फॉर्म के बेला 27 सो दिटा जाको तारो मन रखिब हला चलो the preamble of the Indian Constitution was inspired by borrowed by is different inspired by what do you remember this is French declaration of rights of men la preamble जो कथा तीनटा जिंस फ्रेंच वाला भी कोड उड़े उड़े करथिले से माने नहीं सेटा नहीं फ्रेंच वाला भी ए कांसेप्ट को से माने आउ कोड आंतले लिबर्टी इक्विटी फ्रीडम तो हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन रो नहीं नो डाउट बट ए जिंस प्रियम्बल लो कथा भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन रो राइट ऑफ मैन वाला जिंस एटा हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट ठीक अछि सो डू रिमेंबर दिस इज अ इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिस राइट तापर जदी पचारला जे फीचर हमें कोड बोरो करछु दैट इज यूएस कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन ये होची प्रीएम्बल रिलेटेड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू सेटा को एक्सेप्ट हला तापर तारी रो मॉडिफाई करजन हमर प्रीएम्बल रहला आज पर्यंत गोटे मात्र थरे प्रीएम्बल अमेंड हेची दैट इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जोथिरे तीनटा वर्ड को ऐड कराइची दोज आर सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटीग्रेटिव वर्ड ऐड है शाबाश वेरी गुड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा and the next question is the first hey gala here kono answer direct bole assi oh my god ठीक है छाड़ा डिस्कशन कर दबाओ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम से मैंने को डेट को ये इतले 9th डिसेंबर 1946 ए क्वेश्चन भी बहुत तरह पचारची एई दिन या फर्स्ट डे रे तमरो किए थिले प्रेसिडेंट जदी पचला
टेम्पोरारी प्रेसिडेंट हिसाब रे सचिदानंद सिन्हा थिले आउ कैबिनेट मिशन प्लान होची फाइनल अप्रूवल देइतला या पई टोटल मेंबर संख्या केते थिला पिले 389 टू 296 गोटे थिला आ गोटे 93 गोटे थिला 93 फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स और ये होची ब्रिटिश प्रोविंसेस यार बनी दीटा पार्ट थिला गोटे होची 292 थिला गोटे 4 थिला 4 होची चीफ कमिश्नर्स एरिया रो थिला सो यूज कर ठीक है सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 9th December 1946 नेक्स्ट क्वेश्चन पे The question is which act divided British India into two independent dominions? Dita independent 1947 ro act na 1947. So answer for this question 1947 ro Indian Independence Act of 1947. ठीक है जी ओके एइतरे ऑफिस ऑफ वाइसरॉय को एबॉलिश कर देले से माने तो जो हमरो गवर्नर जनरल हमर लास्ट किए ले फ्री इंडिया रो का को जाय माउंटबेटन फ्री इंडिया रो को जाय माउंटबेटन को First Indian and the last Indian to be the Governor General C. Rajagopalachari. ठीक है? Okay. Because which historical event directly led to the passing of Government of India Act 1858? So 1858 जदि हमें मने पकेबा हिस्ट्री रो इवेंट को 1757 गुड इंपोर्टेंट ईयर थिला इंडियन हिस्ट्री कौन हेतला पिले सेतन बैटल ऑफ प्लासी तार ठीक 100 वर्ष परे 1857 रे गुड रिवोल्ट होची आ यार इंपैक्ट रो कौन हैला हमरो गुड एक्ट पास करा गला दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो उधर बहुत सारे जिंस हैला लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी रो जो येटा को पावर तो घटिगिरी डायरेक्ट एटा क्राउन रूल अंडर को पळेला हैला माने एबे जहा भी जिंस हो थ्रो ईस्ट इंडिया नहीं डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट रे होतला एंड नेक्स्ट इज तमरो वाइसरॉय वाला जिंस को इंट्रोड्यूस करा गला जो गवर्नमेंट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाला पोस्ट देला ताको हटेकरी वाइसरॉय सेक्रेटरी रो पोस्ट क्रिएट करा गला यस सो ये होची जिंस सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सिपोई मीटिंग होची तमरो 1857 ऑडिबल नहीं गाइस एबे सुना दोस्तों चलो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को डाले जीवा एंड हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन the idea of federal structure for India was first time introduced in which act तो फेडरल सेटा जोटा थिला से फीचर सेटा कोनती कि हमर जो यूनिटरी बायस वाला फीचर हमर जो फेडरल हमें जो फेडरेशन को फॉलो करछु सेटा कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन कनाडा माने गवर्नमेंट समिति फॉर्म करछि राइट दिस क्वेश्चन इज फेडरल स्ट्रक्चर हमें 1935 एक्ट तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये एक्ट रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन आसे हैला जेमिति सेपरेशन ऑफ पावर 1909 दायर की 1919 1935 फेडरेशन कथा 47 रे पार्टी जो पार्टीशन ऑफ इंडिया ये सब जिंस तो मन को मन रखे पड़िबो ठीक अछि चलो नेक्स्ट को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस एडा समस्त कहि दिला नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रा मेंबर किए नहति बेले महात्मा गांधी नथिले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो मेंबर सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन महात्मा गांधी ठीक अछि ई गला 15 टा क्वेश्चन तमरो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रो अभी केते क्वेश्चन हे पारे बट त माने ताको जते पढिबो एई गुडा होची इंपोर्टेंट पार्ट गुडा को एगुडा त माने डन नाउ विल कम टू मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फर्स्ट क्वेश्चन रो जीवा गाइस and here is the first question who was the chairman of the constituent assembly of India constituent assembly रो chairman किए थिले assembly रो chairman जदि पचारा या president भी जदि पचारियो that is Dr. राजेंद्र प्रसाद but temporary किए थिले ना सच्चिदानंद सिन्हा थिले ठीक है
चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी इज बी आर अंबेडकर दीटा डिफरेंट जिनस दीटा मिसई दबन तो आंसर ही गला तुमरा राजेंद्र प्रसाद मूविंग फॉरवर्ड विथ द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस यदि पछाला जे तुम राजेंद्र प्रसाद को डेट रे 11 डिसेंबर मन रखियो अच्छा 11 डिसेंबर को डेट रे से चेयरमैन हेले परमानेंट लास्ट रे तो तुम सच्चिदानंद सिन्हा थिले ना who is known as the father of Indian constitution कहा को जाय बले बी आर अंबेडकर फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जाय काई ना ड्राफ्टिंग कमिटी रे से चेयरमैन थिले तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बी आर अंबेडकर को को जाय तो एटा होची कथा जे व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्म को डेट रे तमरा फॉर्म हैला को ईयर रे फॉर्म हैला तो फाइनली कैबिनेट मिशन रा अप्रूवल पर 1946 को हमरो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होची मई मास आडे तमरो इलेक्शन होची नवंबर आडे सरुची एंड फाइनली तमरो कोन होची डिसेंबर रे फर्स्ट सेशन 9th डिसेंबर 1946 को फर्स्ट सेशन तमरो होची एंड दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन गाइस अच्छा पहले कहि परियो जे आमे 389 तो बुझी गले आफ्टर पार्टीशन केते जण मेंबर थिले वेरी गुड आफ्टर पार्टीशन 299 मने रखिबो 299 रो सिस्टम केमिति थिला ना 229 प्लस 70 70 प्रिंसली स्टेट्स रु 229 होसन तमरो ब्रिटिश प्रोविंसेस रु एंड अगेन वन मोर इंफॉर्मेशन गाइस सेही थिरे टोटल 15 जण वुमेन मेंबर भी थिले तो 15 वुमेन मेंबर्स आर देयर ओके 15 वुमेन मेंबर्स अच्छा से जो तुम प्रिंसली स्टेट्स तो छाड़ ब्रिटिश प्रोविंसेस रो इलेक्शन हेतिला इनडायरेक्ट इलेक्शन जोडा कहउतले से इलेक्शन रो प्रोसेस केमति थिला प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट थिला जो वोटिंग सिस्टम आम्मे करूछु सेटा होची कि फास्ट फास्ट द पोस्ट सिस्टम बोली को जाय एजीएसओ एग्जाम रे आस्थिला सेटा ओके हाउ मेनी मेंबर्स वर ओरिजिनली इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ओरिजिनली हमरो 389 जोथरे हमें भाग केमती करथिले ना 296 93 296 रे भाग केमती हला 292 आउ चारि जन को एरिया रे थिले कहलो बलूचिस्तान आउ अजमेर ओके शाबाश चलो आगे बढ़िया था नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस द क्वेश्चन इज कि which plan led to the formation of the constituent assembly तो फाइनल अप्रूवल फाइनल से कहार थिला दैट इज द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946 कैबिनेट मिशन रे को तीन जन मेंबर आस्थिले पेथिक लॉरेंस एबी अलेक्जेंडर स्टाफोर्ड क्रिप्स एटा थरे पछरे जे एमानो को भितरु किए नथिले मेंबर पछरे क्रिप्स थिले तमरो चेयरमैन तमरो लॉरेंस लॉरेंस थिले तमरो चेयरमैन ठीक अछि तो एटा पछरे हां देखि त चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा हे भगवान एटा गोटे क्वेश्चन है क्वेश्चन समस्त मन रखिबो जे 2 वर्ष 11 मास 18 दिन टोटल से माने नेइथिले कॉन्स्टिट्यूशन को बनिया पाई बाय द वे ड्राफ्टिंग तो मात्र 147 दिन रे बनिथिला ड्राफ्टिंग टा बट एमाने टोटल कॉन्स्टिट्यूशन बनेवा पाई 2 वर्ष 11 मास 18 दिन नेइथिले जदि हमें डेट मने पकेवा 9th डिसेंबर फर्स्ट मीटिंग थिला एंड सेटा एंड हला कोदरे को डेट को सरिला केबे सरिला डायरेक्ट तमरो 26 जनवरी 1950 फाइनल से दिन होई पूरा माने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सॉरी जी नो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन को निजो एंड अडॉप्ट को डेट रे कला 26 नवंबर 1949 रे बट लागू केबे हला देश रे पूरा दैट इज 26 जनवरी 1950 एंड सेही दिन ही लास्ट तमरो सेशन हेतिला बोली माना जाय राइट सो टोटल ऊपर 2 वर्ष 11 मास 18 दिन जोथरे टोटल केतरा सेशन हेतिला पले 11 सेशंस वे देयर टोटल 11 टा सेशन हेतिला हला 11 टा सेशन हेतिला बस टोटल खर्च केते हेतिला जानछो 64 लाख approximately 64 लाख ओके 11 टा सेशन हेतिला
टोटल 2200 प्लस अमेंडमेंट भी कराई थला ये ऊपर फाइन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा एंड हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस अडॉप्ट केबे कला इफ इट इज अडॉप्ट ताले अडॉप्ट हला होची 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कला काली गला ना कॉन्स्टिट्यूशन डे व्हेन डिड द इंडियन कम इनटू इफेक्ट तो कम इनटू इफेक्ट होची जनवरी 26 1950 now preamble inspired from French Revolution preamble feature borrow करछु यूएस रु लैंग्वेज थिला ऑस्ट्रेलिया हमें ऑलरेडी डिस्कशन करथिलु एंड एई जिंसो बोरो कथा पडला तो इंस्पायर्ड फ्रॉम गला एटा होची तमर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन हेजो तो ये होची तमर आंसर हेजो अच्छा मते कहलो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन तमर जवाहरलाल नेहरू मूव करथिले सेटा को डेट रे मूव हेतिला 13th डिसेंबर अच्छा एक्सेप्ट केबे करथिला 22nd जनवरी 1947 1947 ओके 1950 जाए आउ कौन काम रहिले जाऊ तो which committee prepared to draft that is the drafting committee बिले केबे तमरो फॉर्म हेतिला जदी पचाला वेरी गुड 29th अगस्त हमें काफी थरो डिस्कस करलोनी एटा को तो जेते थरो डिस्कशन करियो से तो मने रहियो जिंस 1947 को फॉर्म हैला एंड ये 21st फरवरी 22nd ना 21st फरवरी शाबाश 1948 को सबमिट कला निजरो ड्राफ्ट ओके कैलिग्राफर किए पचारे कॉन्स्टिट्यूशन रो कैलिग्राफर प्रेम नारायण रायजादा अच्छा वेरी गुड ओके अच्छा सिंबल कौन थिला हमरो कॉन्स्टिट्यूशन रो हाथी एलिफेंट थिला ओके so next question is Ajay how many schedules did the original Indian constitution have तो 26 जनवरी 1950 को हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हैला एट दैट टाइम वी हैव अ प्रीएम्बल हम कॉन्स्टिट्यूशन रे गोटे प्रीएम्बल थिला 395 टा आर्टिकल्स थिला से आर्टिकल्स मानकर 22 टा पार्ट थिला और 22 टा पार्ट सह 8 टा शेड्यूल थिला एबे जदि हमें देखिबा करेंटली वी हैव 12 शेड्यूल्स जदि मने पकेवा 8 शेड्यूल पर 9th शेड्यूल जोटा की जमींदारी रिलेटेड थिला द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे एटा ऐड हेतिला फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1950 1 ना 2 1 तापर होची नेक्स्ट होची तमरो कोन आसला ना 10th शेड्यूल होची एंटी डिफेक्शन रिलेटेड दैट इज 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 ओके नेक्स्ट होची तमरो 11th शेड्यूल 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जोटा की पंचायत रिलेटेड थिला राइट 92nd constitutional amendment 73rd constitutional amendment act 73rd होची तमरो कोडा पंचायत तापर 74th रे ऐड हला तमरो 12th schedule शाबाश from which country's constitution was the concept of DPSP from Irish constitution if we discuss about DPSP that is principle of state policy हमारा पार्ट को पार्ट रे मेंशन है जी पार्ट 4 रे आर्टिकल केते रु केते आर्टिकल 36 रु 51 पर्यंत तीन प्रकार हमें ए प्रिंसिपल को डिवाइड करी रखियो तीन प्रकार कोन कोन गांधीयन सोशल आउट लिबरल इंटेलेक्चुअल शाबाश वेरी गुड who proposed objective resolution we already have discussed this thing the Jawaharlal Nehru objective resolution को मूव करथिले जोडा आगो को जाई के हमर प्रीएम्बल हैला डेट हमें मन रखले 13 डिसेंबर को 22 फरवरी जनवरी 22 जनवरी बस ये तो प्रॉब्लम है 22 नहीं सॉरी थी खराब 22 जनवरी 22nd जनवरी 1947 मन रखो okay the next question the first state to be created on a linguistic basis after the adoption of the constitution and it is mentioned here after adoption jodi kichi no lekhitanda this is odisha jodi lekhichi that is andhra pradesh year kon thila bile 1956
ठीक है। तो इवन कर्णाटक केरला एमाने भी सब 1956 रही एटा 1955 लेके बोते लागुच। हमें ऑलरेडी एटा डिस्कशन करछु जे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन रे केतरा आर्टिकल थिला ना 395 टा आर्टिकल थिला जोतरे टोटल 22 टा पार्ट्स थिले। शाबाश, वेरी गुड। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवा नेक्स्ट लास्ट पार्ट को, दैट इज सैलिएंट फीचर। तो टोटल 15 30 टा क्वेश्चन गला, 15 टा बैकग्राउंड 15 टा मेकिंग। नाउ सैलिएंट फीचर को जीवा। सैलिएंट फीचर रो फर्स्ट क्वेश्चन को आसीबा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टाको पार्टली रिजिड और पार्टली फ्लेक्सिबल बोली कहा जाए काहे की? बिकॉज ना टाको टोटल अमेंड करियो ना ये टोटली अमेंड हेई परिबनी। अमेंडमेंट फीचर जुगु या को फ्लेक्सिबल को आउची, रिजिड एई पई को आउची बिकॉज सम फीचर्स आर देयर जोटा को चेंज करि परिबो नाही केई भी, माने अमेंडमेंट रे भी चेंज हेई परिबनी जोटा को रिजिड बोली को आउची, राइट। जिमने हमर सोवरेन, जिमने हम सेक्युलर, ए सब जिंस चेंज हेई परिबनी। शाबाश। तो ये होची पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल। तो फीचर रो नेक्स्ट पॉइंट आसुची सैलिएंट फीचर ही एटा पार्ट the Indian constitution the lengthiest one, the longest written constitution in the world, longest because ebe around kete 450 plus 400 485 around he galani articles he galani already 25 टा पार्ट अछि 12 टा शेड्यूल अछि। तो ये होची कथा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सेक्युलर कहले तमे कोन बुझुछ? सेक्युलर कहले तमे ओडिया रे कहउछ धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष रो दीटा मीनिंग सब बेले मन रखियो। इंडिया एज ए स्टेट इज हैविंग नो रिलीजन, स्टेट रो किछि भी रिलीजन नाही, से भाई इंडिया को हिंदुस्तान को जाउनी, आगरो हिंदुस्तान बोली को आउतला। जेहेतु एटी सब धर्म को समान ये दिया होची तेनटा को हिंदुस्तान बोली को जाउ नाही। अब इंडिया रो दीटा ना सब बेले अछि। आर्टिकल 1 हिसाब रे इंडिया को भारत बोली भी को जाउची। ओके, तो कथा उठी एटा कि सेक्युलर कहले कोन बुझे ना? सेक्युलर कहले हमें या बुझुछु जे इंडिया गोटे नेशन हिसाब रे तार किछि भी रिलीजन नाही, बट इंडिया रे रहुतवा लोक मानकर अनेक रिलीजन अछि एंड इंडियन गवर्नमेंट सब रिलीजन को इक्वल रेस्पेक्ट और इक्वल प्रोटेक्शन दउछि। दैट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म। हमर सेक्युलरिज्म रे मीनिंग होछि या। तो सेक्युलर कहले कोन हो यार आंसर? a state with no religion of its own, right? सर तमे कहो सर हमें तो हिंदू मुस्लिम आमर ही पारे बट स्टेट रो किछि रिलीजन नहीं। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बोली अब ये वर्ड टा केबे ऐड हेतरा बेले प्रियम्बल ले 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे ऐड हेतरा। सेक्युलर कथा आर्टिकल जदी पचारि को आर्टिकल ले मेंशन हेछि लागु छी 25 रो 28 तो रिलीजन कथा गला आउ कोठी धर्म कथा रही पारे 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आउट 15 डिस्क्रिमिनेशन करि परिबो नहीं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। हां कि नहीं? रिलीजन कथा लिखा हित ना नहीं? तने 14 15 25 रु 28 आर्टिकल सबुतरे से जिंस अछि। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो व्हिच फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, दैट इज फेडरल स्कीम। हमें जो फेडरल सिस्टम को फॉलो करूछु दैट इज हमरो 1935 एक्ट रु ही बोरो करछु हमें। तो आंसर इज योर फेडरल scheme. So this is fundamental rights. Fundamental rights को बता दियो बा। This is part 3 of Indian Constitution. Part 3 रे मेंशन है जी, yes or no? And article केते रुपिले केते पर्यंत? आर्टिकल 12 रो नै कि 35 पर्यंत केते प्रकार राइट विषय रे जानछो? ओरिजिनली वी हैव केते राइट? गोटे राइट को केबे हटा गला? 44th अमेंडमेंट रे हटाई। 44th अमेंडमेंट रे जो राइट टू प्रॉपर्टी वाला जिंस रे दिला ताको हटाई कि आर्टिकल 301 उनी आइछि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कराई। तो छटा राइट कोन जदि मने पकेबा? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, रिलीजियस फ्रीडम, माइनॉरिटी मानकर फ्रीडम, आउ होछि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। तो आंसर विल बी यूएसए। तो यूएसए इज द आंसर गाइस। The Indian Constitution provides for आमे कौन फॉलो करछु? आमे सिंगल सिटीजनशिप को फॉलो करछु। जोटी की जाओ तमे भारतीय बोली कहबो, राइट? यूएस रो दिवे सिटीजनशिप तांकर
हैं नथिबो डुअल सिटीजनशिप यूएस रो अछि माने तांको स्टेट वालांगर अछि गोटे सिटीजनशिप तो सेही पई हमर गोटे मात्र कार्ड नल दिदरे कार्ड हे दना है ना सो आंसर इज सिंगल सिटीजनशिप एंड दिस वी हैव बोरोड फ्रॉम हमें कोड बोरो यूके रू बोरो करछु शाबाश बहुत बढ़िया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा okay so the dietary principle of state policy aim to establish what it aims to establish a कोन welfare state के welfare nation कथा अछि okay welfare state आउ dietary principle बोरो करथिला हम आयरलैंड आर्टिकल चला केते रु केते 36 रु 51 तीन प्रकार राइट ऑलरेडी डिस्कशन करलुनी केतरा राइट विषय कहलो यूनिफॉर्म सिविल कोड केते आर्टिकल अच्छा राइट टू वर्क 39 ए ता कोन 39 ए राइट फ्री लीगल एड वर्क अच्छी अच्छी इक्वल पे वेज कथा अछि तो 43 आर्टिकल 43 या 41 रे देखो तुम थिबो राइट टू वर्क ताले 43 रे थिबो देखि दियो टिके राइट टू वर्क उडे पछारे सेठी देखो सेठी लिखा है एपट साइड देखो इसा देखो पाखो जाई हां 43 तो 41 ଅଛି ତ ठीक ଅଛି 41 अच्छा एमिति केतरा आर्टिकल विषय पछारे आर्टिकल 48 ए विषय पछारे प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट हां कि नहीं तो आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव आउ आर्टिकल 51 पीस फाइन बस बस intoxication the concept of the parliamentary system how do we borrow करछु we borrowed this feature from UK because US is following what US is following presidential form of government अच्छा presidential form of government और parliamentary form of government भितरे basic difference यदि केही पचाला कोन कहबो तो parliamentary form of government ता responsible government बोली कहा जाय because here the executive is responsible to the judiciary but presidential form of government रे executive is separate from the legislature बुझी परछ नै here the executive is responsible to the legislature okay तो तमे देखियो जदि मिनिस्टर गुडा को क्वेश्चन आ रे मिनिस्टर को क्वेश्चन पचरा होची नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करे कि पूरा मिनिस्ट्री को हटै परछनी दैट मींस एक्जीक्यूटिव रो पूरा कंट्रोल का हाथ रे रहलानी लेजिस्लेचर हाथ रे ठीक अछि सो ये होची पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन कथा जदि होबा दिस इज द केशवानंद भारती केस ऑफ 1973 ला या परे परे ही 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आस्तला जोडा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोली कह जातला बिकॉज़ मेनी कांसेप्ट को ए माने पूरा चेंज करे देबे ठीक अछि तो केशवानंद भारती केस ऑफ 1973 ओके दिस इज अ वेरी रिपीटेड क्वेश्चन गाइस एग्जाम रे बहुत तरह क्वेश्चन आसलानी सीरियल ए जिंस को माने रखिवार अछि ट्रिपल डीआर sovereign socialist secular democratic republic so answer will be option A ए दिटा नथिला 42nd amendment परे ऐड हेतिला ओके which feature of Indian constitution establishes it as a quasi federal system तो quasi federal माने division of power between the center and state कोटी डिवीजन ऑफ पावर कथा अछि हां वेरी गुड 7th शेड्यूल ले अछि पिले 7th शेड्यूल ले कोन अछि ना लिस्ट गुडा को अछि को लिस्ट ना तीन प्रकार लिस्ट अछनी हमर तीन प्रकार लिस्ट कोन कोन ना गोटे होछि यूनियन लिस्ट गोटे स्टेट लिस्ट गोटे होछि कनकरेंट लिस्ट यूनियन लिस्ट से केतरा आइटम अछि पिले स्टेट लिस्ट से वेरी गुड आउ तमर 61 कनकरेंट लिस्ट है 52 आइटम ठीक है original 97 टा थिला what does the term republic in the Indian constitution signify republic कहले the head of the state is elected one head of the state कथा कहले जदि हमर head of the state किए the president of India आज ओडिसा आछन हो कि नहीं देखा करलन हां हमर एटिका तो ना कोन
देखा कौन करियो घर लोक रिटायर देखा हो तो और रिटायर पर देखा करियो अच्छा अच्छा तो हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड वन इलेक्टेड माने डायरेक्टली होंतु कि इनडायरेक्टली होंतु बट इलेक्टेड हवा दरकार हेरिडिटरी नुहे हेरिडिटरी हेले सेटा मोनार्किकल सिस्टम हे जिवो हो कि नहीं तो एठी हमर लोक मानकर किछि नाही इलेक्शन रे इलेक्शन के करूची इलेक्ट के करूची यांको गुड इलेक्टोरल कॉलेज उधर के रहंती बिले इलेक्टेड मेंबर रहंती एमपीस इलेक्टेड एमएलए स्टेट रो इलेक्टेड एमएलए यूटी दिल्ली और पुडुचेरी रो ठीक अछि आ को सिस्टम रे यांकर इलेक्शन होय बिले proportional representation by means of single transferable how is the indian constitution amended indian constitution को केमिति amend करा जाय से पचर केमिति खाली स्पेशल मेजॉरिटी तो आ कहू ना पार्लियामेंट रो स्टेट माने नॉर्मली हमें जदि देखियो स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट बोली कॉन्स्टिट्यूशनल जति के अमेंडमेंट सब अछन राइट ओके अमेंडमेंट चारि प्रकार अछन चारि प्रकार तो कौन कौन अमेंडमेंट रो मेजॉरिटी कथा को अमेंडमेंट रो मेजॉरिटी चारि प्रकार अछन कौन चारि प्रकार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी सिंपल मेजॉरिटी आउटे इफेक्टिव मेजॉरिटी आउटे होचे तमरो स्पेशल मेजॉरिटी हैला तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कोटा बिले ओदा ऑफ द मेंबर राइट इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑधा सिंपल मेजॉरिटी जितकी जन अछंती तारो जते जन वोट करछन तारो ऑधा +1 एंड स्पेशल मेजॉरिटी कोन हाउस रो 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग राइट सबुट स्ट्रांगेस्ट मेजॉरिटी जो देखियो दैट इज इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट को इंपीचमेंट हुए 2/3 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस रो स्ट्रेंथ रो 2/3 केते जन प्रेसिडेंट केते जन वोट करछन सेटा मैटर करू नाही द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर वी प्रोवाइड फॉर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एटा को भी चेंज कर परबे दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को के चेंज कर परबे नाही हो के नहीं हम बोरो करथिलु बस नेक्स्ट सो द प्रोविजन फॉर फंडामेंटल ड्यूटी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल नथिला स्वरण सिंह देखो फंडामेंटल ड्यूटी रिलेटेड 4-5टा क्वेश्चन ही आते 5टा क्वेश्चन कौन सुनो को पार्ट रे अछि एटा तो को पार्ट रे अछि बोले पार्ट 4A रे अछि पार्ट 4A अच्छा आर्टिकल 51 कौन तुलसी कोठी अछ 12 रे पहुंची गेलन तमे फंडामेंटल राइट ड्यूटी भितरे अच्छा कहार रिकमेंडेशन थिला स्वरण सिंह कमिटी रो रिकमेंडेशन थिला स्वरण सिंह कमिटी 10टा नहीं सॉरी 8टा फंडामेंटल ड्यूटी को रेकमेंड करथिला बट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट फाइनली एटा को ऐड कला जोथिरे 10टा फंडामेंटल ड्यूटी गोटे थरो मात्र अमेंड हिची दैट इज 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जोथिरे 11th फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड कराइची एंड करेंटली वी हैव 11टा फंडामेंटल ड्यूटी सो आंसर इज फंडामेंटल ड्यूटी कोठु बोर्ड को गया यूएसएसआर नाही मुंडो फटे देबी रो क्लास टा सर ये नडिया फटेला वाले फटे दे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स कोठी लिखाई जेटा बिले आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहूची कोन ना इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स तो आर्टिकल 1 रे मेंशन है तो आर्टिकल 1 रे दीटा जिंस द नेचर ऑफ आवर स्टेट आम देशर नेचर माने कोन केमिति एडा यूनियन वाला स्टेट्स यूनियन और यूनाइटेड विथ डिफरेंस यूनाइटेड माने केते जण आसिकी गुडे एग्रीमेंट रे यूनाइटेड बनिछन पर यूनियन ऑलरेडी गुडे एग्जिस्ट करूतला से छोटो छोटो पावर डिस्ट्रीब्यूट करिछि एटी केही चाहिले बाहरी जाई परिबे नाही बट यूनाइटेड रे जे चाहिबो बाहरी जाई परिबो एग्रीमेंट को कैंसिल कर देबे से माने बुझा पड़ तो यूएस रो कथा सेठी और सेठी इक्वल रिप्रेजेंटेशन हमर एटी इक्वल रिप्रेजेंटेशन नाही द आईडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट कोड हम नै छु ऑस्ट्रेलिया रो आउ कोन नै छु बिले जॉइंट सिटिंग आउ कॉमन ट्रेड लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल चारटा जिंस को मन रखिया अछि तो आंसर इज ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन द कांसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू वाइज जुडिशियल रिव्यू हमें आंचू आर्टिकल 13 व्हिच इज नॉट ए लॉ दैट मींस दे कैन चेक कि कोटा लॉ नुहे दैट मींस लेजिस्लेचर को चेक करियर पावर जुडिशियरी पाखरे अंडर आर्टिकल 13 ठीक अछि
Next one. The division of powers between the center and the states in Indian Constitution. Federalism. Federalism कहले power distribution ना division of power कथा पड़ुछि ना. So answer is federalism को आजिबो. ठीक अछि. याकू federalism principle बोली को आजिबो. The idea of the president as the nominal head, de jure head, and the prime minister is taken from कोउटो आमे नै छु पिले UK constitution रो नै छु. Near answer is UK. Fine. So this is all about today's session, guys. We have completed total 50 questions. Okay. Tomorrow kali pai kon रहियो पिले? Kali pai रहियो preamble. ता सहित kali preamble रहियो तो बोली गला. काली की रहियो preamble आउ union and its territory. Okay. काली की एति की पढ़ी थियो बोल से काली की हमें डिस्कशन करियो या ऊपर 50 टा क्वेश्चन. हाँ स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी अच्छी अच्छी आगो को इंट्रोड्यूस है एटारे सिंगल लाइन रखा है तापर स्टेटमेंट वाला रखा है. ओके सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन. थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस. जो माने YouTube रे अछंती तुम माने जे चाहिबो चेतना बैच जोडा हमर चाली ची एटा 21 नंबर सेशन थिला तो माने सेरा को एप्लीकेशन रु चाहिले एनरोल करि परिबो. एंड जो माने एप्लीकेशन रे अछ बेले तुम को जहा भी डाउट बाउट रहला किछि भी तुम सजेस्ट करियो को चाहछो यू ऑलवेज